welcome to the Good Desk. In this video, we will talk about Amazon VPC, and this is kind of go through video. We are not doing any hands-on in this session. Okay, let's start. So Amazon VPC stands for Amazon Virtual Private Cloud. It is a web service that allows users to create isolated private networks within the AWS cloud infrastructure. It enables users to define their own virtual network environment, including IP addresses ranges, subnets, route tables, and network gateways. सो बेसिकली अमेजोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक वेब सर्विस है जिससे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने आइसोलेटेड और प्राइवेट नेटवर्क विद इन द AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या हेल्प होती है? इससे हम अपना वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट या फिर बाहर की जो भी नेटवर्क्स होंगे उनसे आइसोलेटेड होगा एंड वी कैन डिफाइन द IP रेंजेस अकॉर्डिंग टू अस। इवन वी कैन डिवाइड our resources into smaller sub networks, and even we can define the route tables and all the traffic. We can configure the firewall also. So it helps in launching the AWS resources in logically isolated network. So ये वही है कि हम अपने AWS resources को isolated environment या network में launch कर सकते हैं जिससे किसी और network के साथ उनका interference नहीं होगा. And second, closely resembles the traditional network like an on-premise setup but with the scalability of infrastructure. यानी कि ये जो Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है ये क्लोजली रिजेंबल करता है जो हमारी ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है या फिर जो ऑन प्रीमाइस सेटअप में वी कॉन्फ़िगर द फायरवॉल एंड द राउटर द स्विचेस एंड ऑल द थिंग्स। सेम चीजें हमें यहाँ पे करनी होती है बट वी गेट द स्केलेबिलिटी ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज काइंड ऑफ मच इजियर देन इन द ऑन प्रीमाइस सेटअप। सो लेट्स हेड अप फॉर आवर VPC। देखते हैं कंसोल पे जाके। So I'm on my AWS console and here just search for VPC, the first one. Now one thing, when you create an AWS account, it automatically creates a default VPC for you. So here we see multiple features. First of all, we notice the IP version CIDR. This is the default CIDR that I already told you in the earlier videos that AWS basically provides this one as the CIDR block for the default VPC. Okay. Now here we see the main route table, main network access control list and all. We'll see these in the later videos, but for now the main route table or the route table basically defines कि कैसे हमारा जो नेटवर्क है वो डायरेक्ट होगा between the subnets. Okay, और वो कैसे एक इंटरनेट गेटवे कनेक्शन के साथ जा सकता है. What is internet gateway connection? That basically provide the internet connection to our VPC from the public network. ठीक है, पब्लिक नेटवर्क से जो हमारा VPC को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा दैट इज इंटरनेट गेटवे. ओके, और जो सबनेट्स के बीच में ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है दैट इज द वर्क ऑफ राउट टेबल्स. नाउ द नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और द नेकल, इट इज बेसिकली द फायरवॉल्स ऑफ द सब नेटवर्क्स. ठीक है, अभी सब नेटवर्क्स पे भी आएंगे बट फर्स्ट वी हैव टू गो टू द रिसोर्स मैप. हियर वी सी दिस इज द VPC एंड सबनेट्स. ओके, तो सबनेट्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. सबनेट्स आर बेसिकली अ सेगमेंटेड पोर्शन ऑफ अ लार्जर नेटवर्क. अ सबनेट इज अ वे टू डिवाइड एंड ऑर्गेनाइज IP एड्रेस स्पेस विद इन अ नेटवर्क. यानी कि जो एक लार्जर नेटवर्क होगा अगर मैं उसको सब पार्ट्स में या फिर उसके सबनेट्स डिवाइड कर दूं विद इन स्मॉलर सब नेटवर्क्स तो उसको हम सबनेट्स बोलते हैं. This is a very efficient way of dividing the IP address ranges into smaller networks. अब ये होता कैसे देखते हैं. तो पहले एक VPC का देख लेते हैं. सपोज ये हमारा AWS रीजन है. ठीक है, इसमें हमने अपना VPC डिफाइन कर दिया. इसमें हम मल्टीपल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं कि वी नीड दिस एंड ऑल्सो वी इनेबल द फायरवॉल बाय यूजिंग द नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड ऑल. ठीक है, उसको बाद में देखेंगे. बट सपोज मैंने कोई भी ओके where's the library, it's fine, I don't know how it's going but it's okay. So मेरा कोई भी सर्वर है. ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इसमें एक सर्वर लॉन्च कर दिया. ठीक है, सो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इट इज डेफिनेटली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर नेटवर्क्स.
ये मेरा AWS का VPC है, मैंने अपने इसमें IP रेंजेस डिफाइन कर दी हैं, एंड ये जो भी सर्वर होंगे इसमें, सपोज देयर आर मल्टीपल सर्वर्स, ओके, सो ये मेरे बाहर के नेटवर्क से आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। अदर नेटवर्क्स कैन नॉट इंटरफेयर in this without my permission or without the network configuration that I define with the new traffic. Now for the subnets, suppose मेरे एक सर्वर है जो कि मैं यूज करूंगा एज अ VPN सर्वर, एंड वन सर्वर इज अ एप्लीकेशन सर्वर। सो डेफिनेटली आई डोंट वांट माय होल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या फिर पूरा एक CIDR ब्लॉक सिर्फ इन्हीं के लिए मैं डेडिकेट कर दूं या फिर उन्हीं में से डायरेक्ट मैं चीजें उठाऊं। दिस इज काइंड ऑफ इनएफिशिएंट मेथड। सो रेदर देन दैट मैं क्या करूंगा, आई कैन डिवाइड माई नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स, और उसमें जो एप्लीकेशन सर्वर होगा वो मैं एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, अवेलेबिलिटी नॉट द अवेलेबिलिटी जोन, ये एक अलग सबनेट में होगा, और इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आई कैन डिफाइन दैट डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। इसको भी देखेंगे हम बाद में। सो इफ आई गो हियर एंड शो यू दी सबनेट्स, so there are 6 subnets, US East 1A, US East 1B, and here you can see हर एक सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन से एसोसिएटेड है। So it is a must condition that every subnet or the subnet that you create must be associated with an availability zone. Okay. And in subnets, if I click on any subnet, okay, and we see the IPv6 for this subnetwork, okay, we can calculate this one. Let me just write CIDR calculator, and you can just go to any website that looks genuine or kind of legit. And if I copy this one and paste it here, I can see there are total of 4096 hosts available. And if I copy the primary, you will definitely see there are lots of hosts in it. There are total of 65,536 hosts. So that basically means I can launch a large number of resources in this VPC. And these subnets are basically the short subnetworks of this main or primary CIDR. Okay, and these are different. These are all different. Okay. One thing, if I click on this subnet, then you go to this one, and which I think P0. So it's P. Okay, this one, first one, and I am copying the IP again. Calculate. So here we see the 4096 of total host. I can see the available IP addresses are 4091. We'll also see the reason for this in the later videos. Now there are two parts of subnets. One is public subnet and other is private subnet. So a public subnet has direct internet connection via an internet gateway. Instances in a public subnet receive both private and public IP address, allowing them to communicate with the internet effortlessly. They do not require net gateways for the internet connection. So basically पब्लिक सबनेट वो है जिसके अंदर अगर मैं कोई भी रिसोर्सेज लॉन्च करता हूँ, देन दैट रिसोर्स विल हैव द डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू एन इंटरनेट गेटवे, ठीक है। और जो भी ये इंस्टांसेस या सर्वर होंगे उसमें मेरे को एक प्राइवेट और पब्लिक आईपी मिलेगी, और उससे मैं डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ या फिर पब्लिक इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एन इंटरनेट गेटवे, ठीक है। एंड दीज डज नॉट रिक्वायर एनी नेट गेटवे, या फिर इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ इन AWS प्राइवेट सबनेट्स, these are the isolated parts of a VPC without direct internet connection. They are ideal for running internal services that shouldn't be accessible from the outside but still need to communicate within the VPC. So basically प्राइवेट सबनेट्स आइसोलेटेड पार्ट होते हैं VPC के, जिन पे डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता. They definitely require a net gateway connection or the net gateway for having the internet connection from the outside. ठीक है, ये बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते बाय डिफॉल्ट, बट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन एन VPC, जो भी प्राइवेट सबनेट में रिसोर्सेज होंगे, ठीक है. So if we head up again here, and here we see the 6 subnets, and you see the route table.
and here there is the network connection and it has only the internet gateway. IGW stands for internet gateway. Okay, so इन सारे सबनेट्स का कनेक्शन एक ही इंटरनेट गेटवे से है. सो दिस डेफिनेटली मीन्स कि इनमें से कोई भी हमारा प्राइवेट सबनेट नहीं है. इफ यहाँ पे कोई भी प्राइवेट सबनेट होता तो हमें एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे या फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इंस्टेंस चाहिए ही चाहिए. दैट इज अ डिफरेंट केस, बट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे और द नेट गेटवे is a must condition for having the internet connection for the private subnets. We will also see these in details in later videos. This was just kind of go through video. That's all. Thanks. And if you have any doubt or query, then you can put that down in the comment section and also mail to us. Thanks.